बुलडोजर एक्शन उपर सुप्रीमकोर्ट को प्रचंड प्रहार जड़े व्यक्ति कौन अपराध में संपृक्त हेले कहीं तार घर भंगा बोली प्रश्न करिसेंती सुप्रीमकोर्ट एक मामलार शुणाणी बेले एभली कड़ा भाषा भर्सना करिसेंती उच्चतम न्यायालय दिल्ली जहांगीरपुर अंचल एक घटनार शुणाणी बेले सुप्रीमकोर्ट खंडपीठ देइछंती मंतव्य किछि दिन तले दिल्ली जहांगीरपुर अंचल में अनेक घर भंगा जाइथिला एपरिक भड़ा दि जाइथिबा किछि घर को मध्य भंगा जाइथिला घर मालिक किंबा भड़ारे थिबा व्यक्ति किछि अपराध करिथिबारु से घर सबु भांगिथिला प्रशासन या विरोध में सुप्रीमकोर्ट रे करा जाइथिला आवेदन कोनोसी अभियुक्तर घर काहीकि भंगाजिबो बोली प्रश्न करिसेंती सुप्रीमकोर्ट आवेदनकारी वकिल सुप्रीमकोर्ट ठारू आश्वासना मागिछंती यह बंद हेउ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहिसेंती कि अपराध कले तार घर भंगा जाए नहीं बरं बेआईन भाव में निर्माण होइथिले घर भंगा जाय थाए यार उत्तर रे सुप्रीमकोर्ट कहिसेंती ताहले आमे गाइडलाइन जारी करिबु कोर्ट कहिथिले प्रथमे नोटिस दियंतु यार उत्तर रखिबाकू समय दिया जाऊ आईनगत व्यवस्था रे समाधान पई चेष्टा करा जाऊ जदि ताहा होई न पारिबो ताहले घर भंगा जाऊ ए मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता काली हेबो समाधान पई उभय पक्षों प्रस्ताव मगा जाइछि किछि वर्ष होला अभियुक्तंकर घर को प्रशासन भांगी देवा एक ट्रेंड पलटिछि उत्तर प्रदेश रु यह आरंभ होइतिला सेति यूपी रो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा बोली तांको प्रशंसक माने कहितांती उत्तर प्रदेश परे यह अन्य राज्य को व्यापी थिला एपरिक किछि दिन तले झारसुगुड़ार एक गुलिकांड में संपृक्त थिबा अभियोग रे जड़े अभियुक्तर घर दुकान आदि भंगा जाइतिला एबे सुप्रीमकोर्ट हस्तक्षेप करिबा परे एथिरे होय तो रोक लागि पारे अधिक चर्चा करिबा वरिष्ठ आईनजीवी सुप्रीमकोर्टर विश्वजित दास आम सहित जोड़ी होती श्रीयुक्त दास आपको स्वागत करुच्ची सुप्रीमकोर्ट प्रश्न पचारिछंती जड़े अभियुक्त है बोली ता घर को आपण केमती भांगी देबे आ तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल उत्तर रखिले केवल अभियुक्त हेले भंगा जाएनी जोड़ा बेआईन घर ताकू भंगा जाए तापरे मध्य सुप्रीमकोर्ट यह उपरे अधिक टिप्पणी मध्य रखिछंती केम देखुछंती मामला को आपण terrible and these are extraordinarily bad policies. And I think there is a time where we have to actually account this kind of a bad policy implementation of law. आपनकर जणे अभियुक्त हेबा परे ताकू ट्रायल करा जीवो कोर्ट रे से मानेकर कोठी गोटाए गुंडागर्दी करिछि बा काहाकू मर्डर करिछि सेति पय ट्रायल हबो से ट्रायल रे ताकू सजा हेला परे तार सही अनुसार तार प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट दिया जीवा कथा राइट आपण ताकू जेते बेले ताकू एलिगेशन करूछन्ती जे सी जाई कि ना जे कोठी गोटे राइट कला काहाकू मर्डर कला सेही समय रे आपनकर मने पड़ी गला जे घरटाकू से गोटा से जो घरे रहिछि सेठी गोटे से सेटा गोटे इलीगल कंस्ट्रक्शन करछि तेनु सेटा गोटे आसी संगे संगे भंगी दिया जाऊ माने एटा कोन माने आपण देखेबे जे मु लंदन जाउछि टिकट करिवे लंदन देखला को जाई कि पहुंची जिबे टोक्यो आई मीन This is terrible kind of a governance happening and the time has come. The Supreme Court has come down heavily also and I'm sure the Supreme Court will also lay down the policies, guidelines for it that how it should be done. There are two different laws. One is the demolition pai, apankar illegal construction pai, there is a different law for which there is a consequences, there is a procedure, there is a authority. These people will act and according to the procedure. You can't be mixing one with the other and then will try to act in a vengeful manner. This is nothing but no less than a this is mob lynching in the form of a governance, and this should be actually deprecated in all forms. And this kind of a governance, which has started from UP, has to come to an end at some point in time. And sure, this honorable Supreme Court, it's a core rule of law. Vindictiveness of administration, sir. आपण देखुचंती कि यह administration नो गोटे vindictiveness. Absolutely. I mean, if it is so visible, again, I mean, for a state, people are equal, right? Now, and it should not be distinguished on the grounds of the religion, caste, age, sex, or a location. Now, what is happening today is actually, it is a kind of a mob lynching in the form of a governance where authority, who is accusing somebody without waiting for the outcome, which is the job of the court, they are trying to also do the justice by themselves. Can a citizen will be allowed, somebody which is slapped in the road, he will use the weapon to kill that man who is slapping him? Can a complainant become also the judge of his own cause? This is nothing less than this kind of a aberrancy has to come to an end. Some point in time, someone has to account, and it should not be only in the form of a guidelines. According to me, it should be accounted for in the form of some kind of a officer getting personally accounted for this kind of a malgovernance and terrible form of. And look at this.
आपण कौन करने को चाहूँगी आपण जदि यही भलिया परिप्रेक्षी जदि आपण एटा को गवर्नेंस को नहीं कि जीवा को चाहिए बुझी पारुछन कौन हेबा को जाउची आई मीन दिस इज वी आर ए मल्टी लिंग्विस्टिक मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियन कंट्री with a different level of economic strata and the people, even if a person is really is a terrorist, yes, there is a Kasab killed everybody broad daylight. Everybody saw him killing with AK-47. But the law, the beauty of our constitution is that it also gave him the right to defend himself. That's the very beauty. Now the people are protected by it. You know, today I may be part of a mob. I may be trying to go for a bloodthirsty. I will say that, okay, hang the man on the road, which we are hearing about in the Afghanistan and other places. Are we looking for that kind of a governance? Sir, exactly. सही प्रश्न सर उठुला पूर्वरु जे एठी गोटे आईन अछि गोटे संविधान अछि आउ बिफोर द लॉ जने कन्विक्ट होबार आवश्यकता मध्ये अछि किंतु ता पूर्वरु गोटे अभियुक्त स्तर रे गोटे लोकर घर को आपण भांगी देबे ताकू डिमोलिश कर देबे एवं तार सबु किछि परिश्रम को आपण बर्बाद केमती कर देबे बिना कोनोसी तथ्य प्रमाण रे याकू नै कि बड़ प्रश्न उठछि किंतु ता ठार बड़ प्रश्न सर उठिबो तळ दिन रे याकू नै कि कोनोसी प्रश्न हेनी बा कोनोसी कोर्ट स्वत संज्ञान भी घटना को नै कि नै नाहंती Absolutely, because see, now we are evolving. Actually, with the passage of time, we are trying to see the different forms of governance, different forms of ills of the governance. Now, this is also one part of a ills of governance. Yes, the government is looking for better, social structure, better compliance, better governance. But at the end of the day, what kind of a solution you are offering? You are rather giving the problem rather than the solution. There is a procedure, there is a court. Court is the person. So there is a division of power. Executive will exercise its power under the authority of law, and that will be decided by the court. And court is independent of the authority. So what you are trying to do, you are trying to become a complainant. You will also try to become a judge. You will be the jury. You will be the prosecutor. You will be everything. I mean, what kind of a governance is this? I mean, it is also happening in Somalia. Are we Somalia? Okay, you see, therefore I always suggest the procedure, instead of talking about different law, a law gote kama kala ni, a gote apana law nahi aile. Yes, apana dekhuchandi je India re corruption bahut adhika. India re also intolerance also is increasing. India re also there is a lot of antisocial activity. So what is the way forward? You change the law. One law doesn't work out, you change the law. That's not the way. You have to change the system. किंतु सर जेबे जेबे लोक प्रतिनिधि माने हीरो भाव रे निजु को प्रोजेक्ट करिया पई इच्छा करन्ते आ तांकर प्रचार तंत्र से भली काम करे से माने एमती किछि बेआईन आउ अनकन्स्टिट्यूशनल काम करने को निर्देश दियंती सर अनेक अनेक धन्यवाद आपनकर मतामत पई विश्वजित दास वरिष्ठ आईनजीवी सुप्रीम कोर्टर ए प्रसंग रे आम सहित अधिक चर्चा करुथले।